Hi, welcome each and every one of you, and very good morning on this special Tuesday. And we are live. Yes, we are exactly live ना. सब देख रहे हैं तो काम Hi, करना पड़ेगा. welcome. देखिए, इंटेंशन इस सेशन की क्या है? इंटेंशन इस सेशन की बहुत सिंपल है कि हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लाइव आए हैं और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आएंगे. इंटेंशन वेरी सिंपल है. ये यूथ की जो कैरियर से रिलेटेड क्लैरिटी पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं, उनको हमें एड्रेस करना होता है. दैट वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, राइट. With over 20 plus years I have been with the youth. I understand them well. I understand their confusions which are unexpressed, even with their parents, even with themselves, and it is a taboo topic. कि भाई तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है. Most of the time, most of the people talk to them like that, and even they start blaming themselves कि मुझ में ही कोई कमी है. जब इस तरीके से वो चलेगा तो कहां तक पहुंचेगा? सोचो जरा, कितना बढ़ेगा. और फिर वो इसी को तो कंपाउंड करेगा ना, कंफ्यूजन को, डाउट को, सेल्फ गिल्ट को, ब्लेम को. और ये कंपाउंड करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिटर्न क्या होगा? एज एंड ऑफ द टाइम क्या रिटर्न उसको मिलेगा? उसको रिटर्न मिलेगा कि जस्ट कंफ्यूज्ड, wasted lots of years, even no clarity, and taking to mess up. I'm not saying everyone, but it's happening most of the thing because there is a research about that. कि 70 मतलब there's a research you can find on Google, right? 85% of youth career success and happiness depends upon their soft skills. But in schools, colleges, universities, this is not happening. They are not market ready, right? They are not even aware of themselves. And how can I say that? It's a journal. Again, if you read the research outcome that says clearly that if in India we talk about 70% of youth lack in that. So what's the solution that we can have? We will talk today on this, right? तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया दैट आई हैव टू एड्रेस कि सर ये बताइए कि अगर कोई हमारा यूथ है वो गुड कैरियर कैसे क्रिएट कर सकता है? गुड कैरियर का मतलब हो गया कि जस्ट उसने जो सोचा था वो कैरियर, जिसको वो डिजर्व करता है वो कैरियर, और उसके पेरेंट उस पर प्राउड करे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी ये लाइफ आपकी है, एक बार मिली है, आपको क्रिएट करनी है. और अगर आप इसकी चॉइस अपने हाथ में लोगे, इसका जस्ट ओनरशिप अपने हाथ में लोगे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लोगे, तो पावर आपके हाथ में है कि आप इसको उसी डायरेक्शन में क्रिएट कर पाओ जिसमें आपको भी खुद पर गर्व हो और आपकी फैमिली को भी खुद पर गर्व हो. अल्टीमेट इंटेंशन यही तो है. तो अलाउ मी टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय लाइव, राइट. कैसे क्रिएट करें गुड कैरियर? देखिए, गुड कैरियर क्रिएट करना कोई एक सेशन में नहीं होने वाला कि मैं आपको कोई ऐसा टिप दे दूं और दैट्स गोइंग टू क्रिएट सम मैजिक. इट्स अ जर्नी. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. आई विल डिस्कस थ्री थिंग्स that I teach in my boot camp, in my workshops, right? That I have given the training to the most of youth, and they have experienced the outcome on that ground, right? Number one, start gaining clarity. What do you mean by clarity? क्लैरिटी का मतलब होता है कि आपको शुरू करना होगा आउट ऑफ द बॉक्स. क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यूथ
जब पढ़ रहे होते हैं तो वो चेस कर रहे होते हैं, वो फॉलो कर रहे होते हैं, वो इस चीज पे ध्यान नहीं रखते कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या चीज बनी है। सारी चीजें हर बंदे के लिए सूट नहीं करती। इफ देयर इज अ इफ देयर इज अ फिश दैट हैज टू स्विम, उसका ये नेचर है। इफ देयर इज अ बर्ड दैट हैज टू फ्लाई, उसका ये नेचर है। लाइकवाइज डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट नेचर। उसी के हिसाब से वो एक्सेल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लाइक अगर कोई एक यूथ है जिसकी एज 20s में है, राइट, अगर वो जॉब कर सकता है, जॉब में बढ़िया हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, तो दूसरा भी उसको देख के करेगा और बेटर हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट, राइट। कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं होंगे। इसीलिए सारे लोग प्रोफेशन के लिए भी नहीं बने हैं, सारे लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए नहीं बने हैं, सारे लोग बिजनेस करने के लिए नहीं बने। तो you just have to have the framework where you can sit by yourself, work on that, and find out what can work for you. And that framework has to be on the basis of what excites you, what's your passion, right? And just leave that what drains you. So, what excites you, you just have to find out. What's your passion? What's your strength? What you can do for hours without getting tired. You just have to start taking the self discovery on that. Until or unless you discover this, you are going to just waste, not invest your golden years. And if once golden years are wasted, that I have realized that it is very late to create something which you can proud of and your family can proud of. So if you are in 20s, this is the golden time to be ready with the clarity. And clarity also takes some efforts, which is usually not happening in our academic system, traditional process. So that requires your courageous action. तो उसके लिए आपको तैयार भी होना होगा. You do it or find some mentor, you will have to take care of. It's your role how you will do it. And then the second step comes. What is the second step? Uh, how to create a good career? I explained. I'm explaining three steps. One, start gaining clarity. How we can do, I discussed. Second is slowly take action. एक्शन का क्या मतलब हो गया? एक्शन का मतलब हो गया, अभी आपको पता पड़ गया कि आपका पैशन क्या है, अभी आपको पता पड़ गया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अभी आपको पता पड़ गया किसी मतलब एक पूरा एक्टिविटी करने के बाद कि मतलब व्हाट कैन एक्साइट यू, राइट, एंड व्हाट कैन ड्रेन यू। तो अभी आपको पता पड़ गया और उसको पता रखने के बाद अगर आप कुछ नहीं करते हो तो इट विल रिमेन एज एन इंफॉर्मेशन ओनली, राइट। व्हेन यू नो समथिंग एंड यू डोंट डू एनीथिंग equals to you don't know it. And when you know something and you start taking action upon that, is actually knowing that. This I have learned. And when you start taking actions slowly and gradually, it will evolve into a confidence within you. इससे आपको confidence आएगा. Confidence is the outcome of taking action. Confidence, most of the student says that कि मुझ में confidence नहीं है कि मैं जाके अपनी बात किसी से कह सकूं, मैं जाके इंटरव्यू दे सकूं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये करियर मेरा भी है कि नहीं है। तो आई वांट टू से देम डायरेक्टली, राइट, विदाउट एनी फ्लॉ, कि आपको एक्शन पहले लेना होगा, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। और एक्शन या तो आपको सक्सेसफुल करेगा या फिर आपको सिखाएगा, और दोनों ही ठीक है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक्शन लूं और उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, दिस इज नॉट योर इन हैंड, दिस इज नॉट इन योर हैंड।
What's in your hand is taking action, be it perfect or imperfect action. Again, perfect action is the outcome of imperfect action. That comes after taking lots of imperfect action. Sometimes some people are blessed कि उनके जस्ट कुछ एक्शंस में ही उनको सफलता मिल जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है. बट फॉर लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फिडेंस, आप सुपर सक्सेसफुल पीपल को उठा के देखिए, वो इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि जितना आपने इम्परफेक्ट एक्शन लिया है, लगातार लिया है, जितना आप कुछ चीजों में सो कॉल्ड आपकी लैंग्वेज में है कि सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, फेलियर हुए हैं, बट दे डोंट परसीव द फेलियर एज फेलियर. फेलियर की जैसी कोई चीज नहीं होती. आइदर यू विन और यू लर्न. एवरी एक्शन which is not giving you the success is teaching you how to take the next action. That teach you how to take the next, very next action, right? So taking slowly and steadily action will give you the confidence. And action का direction क्या होगा, वो जो आपने क्लैरिटी किया है ना, वर्कशीट अपने ऊपर काम किया ना, खुद का निकल के लाया ना, कैरियर का एक्सप्लोर किया ना आपने, जो आपको सूट करता है, एक्साइट करता है, आपका पैशन है, उसके लिए आपने खुद को और फिर अपने पेरेंट को भी कन्विंस किया है, तो फिर उसके लिए आप एक्शन लोगे, और छोटे छोटे और लगातार, और वो चाहे कुछ भी चीज है आपने चूज किया है, तो उसमें जो इंटेंसिटी आपके एक्शन लेने की होगी वो मोर पावरफुल होगी कंपैरेटिवली कि आप वो चूज करें अपने कैरियर के लिए जो आपके पेरेंट ने आपको बताया, आपके एल्डर ब्रदर ने आपको बताया था, आपका कोई फेलो फ्रेंड कर रहा था. तो व्हाट कैन गिव यू द कॉन्फिडेंस, just long lasting confidence, I must say, what can give you the thrill, what can give you the excitement, what can make you fun, right? What can make your actions fun, that is your chosen action, because you are taking the charge of it. तो इंटेंसिटी आपकी प्रोडक्टिविटी की उसी में हाई होती है जो आपने चूज किया हो. उसके लिए क्लैरिटी गेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, राइट? तो स्लोली स्टार्ट टेकिंग एक्शन. एंड द थर्ड इज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक क्लैरिटी लेना स्टार्ट करना इजी है. एक्साइटमेंट में चालू कर देते हैं लोग. सेकंड चीज भी आपकी जो है सेकंड स्टेप है, और वो भी लोग शुरू कर लेते हैं कि एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो मैजिक है वो थर्ड स्टेप में है. दैट इज जहां पर लोग मोस्टली अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, उनके सामने ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, और फिर उससे डर जाते हैं, और फिर वो करना छोड़ देते हैं, एंड दे क्विट. वहीं पर सारा गेम खराब हो जाता है, एंड दे स्टार्ट सेइंग कि यार मेरे लिए नहीं था, मुझे समझने नहीं आया कैसे करना है. भाई तुम्हें समझना नहीं था पहले कि कैसे करना है, तुम्हें करते रहना था, फिर समझ में आना था. और करते रहने की जो एक्टिविटी है, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल ऑफ व्हाट यू हैव चूजन, करते रहने की जो एक्टिविटी है ऑन फॉर द एक्शंस ऑन द थिंग्स दैट यू हैव चूजन, इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग का मतलब होता है कंपाउंडिंग ऑफ योर एक्शंस, राइट? कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कंपाउंडिंग मतलब फाइनेंस का कंपाउंड की बात हो रही है. नहीं, ऐसा नहीं है. फाइनेंस के कंपाउंड की जस्ट बात नहीं हो रही, राइट? फाइनेंस के कंपाउंड की जस्ट बात नहीं हो रही है. केवल फाइनेंस कंपाउंड नहीं होता है, आपकी हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं, आपके एक्शंस भी कंपाउंड होते हैं, एंड दे एक्यूमुलेट इन सच अ वे you become like that. Your regular and consistent taking actions just create your life. Your create the experience of your life. How you experience the life will depend upon the consistently taken action. Even when you don't take action, that's also an action of not taking action. That's also compound and take you of not taking action. You feel overwhelmed, where you feel stressed, where you feel you don't want to be. So what you need to do, कंपाउंड योर एक्शंस. और इसके लिए
मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये नहीं आता है, खुद से नहीं आता है। इसके लिए कोई ना कोई एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम चाहिए होता है, कोई ना कोई एक ग्रुप चाहिए होता है, कोई ना कोई एक मेंटोरशिप चाहिए होती है, कोई ना कोई एक कम्युनिटी चाहिए होती है। तो यू जस्ट हैव टू डिस्कवर वेयर इट कुड बी, और if you want me to help you, I would love to welcome you to my just 3 days boot camp, where we shall give you three of these things which I have discussed, with hand holding, with one-to-one communication, interaction. And if you are already following these things, comment in the chat box that which of these you find very suitable and how you are going to apply this, and uh, how does this relate to you, right? कैसे आप relate कर पा रहे हो अपनी लाइफ से इन सब बातों के बारे में? I would love to read your comment and answer them. Okay. So this is what it is that we have to answer. If any else question that you have, you may type in the chat box so that I answer.